एक हफ्ते से कि स्केड्यूल आया है और स्केड्यूल बना नहीं है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हुआ क्यों है ये स्केड्यूल का लॉजिक। बीसीसी और पुलिस को पता नहीं है नवरात्रि और दुर्गा पूजा या काली पूजा कब हो रहा है 2023 में, जब स्केड्यूल बना रहा है आपको कि यू आर नॉट एबल टू स्टैम्प योर अथॉरिटी कि भाई दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समवन कंप्लेनिंग दैट आई वांट टू चेंज वेन्यूज। आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, 2 महीने हो रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू बुक देयर फ्लाइट्स, बुक देयर टिकट्स, प्लान देयर ट्रिप। FIFA में you got a festival zone. There are hundreds of volunteers. There's a dedicated bar section. मतलब जिनको पीना है वो पी सकते हैं. There's food trucks. You want to eat a lot of food. You can get different varieties of food. जब आईपीएल मई में होता है 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से, ठीक है, You know it. स्टार्ट हो जाता है टिकट्स, फिजिकल पेपर टिकट्स। आई मीन एवरीवन kind of brags about, and rightfully so, I mean the kind of development that India has basically done in going paperless in a lot of aspects। covid हुआ आपका यूपीआई वगैरह हुआ, लेकिन in this day and age if I require a physical ticket for a world event, Exactly how to organize a world-class tournament. They have done it. I think they don't care about Indian fans who come to the stadium. They just don't care. Absolutely. The worst that could possibly happen in organizing a world event has already happened. Yep. 2,000 to 3,000 people will have a fantastic experience because they are getting these hospitality tickets and these quota tickets. तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा फ्रॉम पुलिस की, भैया इनकी चेकिंग whatever, get them, give them the right experience. But the remaining 40,000 people who are going to come to the cricket, yeah, you guys stand in line and get the printout, because that is how it is. So not applicable to World Cup. World Cup तो एनालॉग ही चलेगा, आपको प्रिंट आउट लेके ही आना है. I think it just shows them priorities of where BCCI is. IPL होता तो ये अलग 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 लेवल पे करता. Hello everyone, good afternoon, good evening all. This is crazy BCCI here. Oh, crazy. Okay, I got it. Or hello everyone. Saurav उर्फ पराजय शाह, हम बताएंगे क्यों पराजय शाह है। हाँ, और हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो आज कल न्यूज़ बना हुआ है. टॉपिक इज बीसीसीआई एरोगेंट या इज बीसीसीआई इनकॉम्पिटेंट? क्या कहें? वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी एरोगेंट है या इनकॉम्पिटेंट है? तो इसके आज चर्चा कर रहे हैं. तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करें, चर्चा क्यों हो रही है, व्हाई इट इज द रीजन वी आर टॉकिंग दिस टुडे. तो पिछले एक हफ्ते में ये हुआ. जुलाई 27 को जय शाह, जो हमारे पराजय शाह रेफरेंस यहां दे रहे हैं, इज बीसीसीआई हेड, ने बोले कि वर्ल्ड कप स्केड्यूल 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसमें चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा. एंड द लॉजिक हियर वाज, उन्होंने बताया कि सेवरल कंट्रीज वांट टू मेक ट्वीक्स टू द स्केड्यूल दैट वाज रिलीज्ड इन द मंथ बिफोर. आई मीन अभी हुआ है. एक बड़े टूर्नामेंट जब आप शेड्यूल करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, आपका सबसे पहले होता है आप एक स्केड्यूल सेटअप करो. क्रिकेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है इंडिया में और अभी तक 60 डेज हो रहे हैं. 60 डेज से कम है, अब तो 59 डेज है जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. स्केड्यूल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि जय शाह चाहते हैं कि वो और चेंजेस लाएं. और क्या है वो चेंजेस? पाकिस्तान और इंडिया were supposed to play on October 15th, लेकिन पुलिस ने कहा, तो फिर I'll get to what are the changes. पाकिस्तान ने वो चेंज, इंडिया ने बोला कि हमें चेंज करना है, अक्टूबर 14 को खेलना है. पाकिस्तान ने वो चेंजेस अग्री करे हैं कि क्या है वो चेंज, एंड उससे वो डेट हुआ है अक्टूबर 14. अब उसका रिपल इफेक्ट हुआ है कि पाकिस्तान विल प्ले श्रीलंका on October 10th instead of October 12th. You can see how the ripple effect of this खिचड़ी जो बन रही है schedule changes से. तो ये हुआ अगस्त 2 को, ये पूरा कंफर्मेशन हो गया कि 14 खेलेंगे.
अगस्त 5 को, आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़े घंटे पहले, बंगाल क्रिकेट, सीएबी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करा कि हमें पाकिस्तान और इंग्लैंड को रीस्केड्यूल करना है। आज वो नवंबर 12 को स्केड्यूल में है, उनको नवंबर 11 करना है। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने ममता बनर्जी को भी रीच आउट किया है कि मैडम आप हमें हेल्प करें बीसीसीआई को बोलने के लिए कि आप हमारा टाइमलाइन भी चेंज करवाएं। नेक्स्ट वीक टिकट्स ओपन हो रही हैं, डिजिटल टिकट्स नहीं है, बात बात करेंगे। और 60 डेज के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो सौरभ, ये क्या खिचड़ी बन रही है यहाँ पिछले एक हफ्ते से कि स्केड्यूल आया है और स्केड्यूल बना नहीं है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हुआ क्यों है ये स्केड्यूल का लॉजिक। पहला रीजन जो इंडिया पाकिस्तान का आया है, उन्होंने बोला है लोकल पुलिस ने, लोकल पुलिस जो अहमदाबाद में ये गेम होने वाला है, उन्होंने कंसर्न रेज किया कि ये पहला दिन है नवरात्रों का। तो नवरात्रि, द 9-day Hindu festival, starts on October 15th, and so they had concerns on providing adequate security. This happened by last week. Today, the Cricket Association Bengal has requested BCCI कि we need to move our date as well, क्योंकि काली पूजो या दुर्गा पूजा, जो भी आप पूजा बोल सकते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स इज ऑन नवंबर 12th। तो सिटी पुलिस ने किया कि एनहांस सिक्योरिटी करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान खेल रहा है, कि वी नीड टू मेक नवंबर 11th ऑल्टरनेटिव। सौरभ, माय क्वेश्चन इज, बीसीसी और पुलिस को पता नहीं है नवरात्रि और दुर्गा पूजा या काली पूजा कब हो रहा है 2023 में, जब स्केड्यूल बना रहे हैं? यार अगर मुझे पता करना है कि 10 साल के बाद कब दिवाली या दशहरा है, मुझे शायद पता चल जाए, लुकिंग एट गूगल। एंड बीसीसीआई, एज यू सेड, आई थिंक वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी। आई थिंक जब वर्ल्ड कप के राइट्स दिए होंगे, उनको तभी शायद पता चल गया हो कि दशहरा, दिवाली, नवरात्रे, होली, रक्षाबंधन कब है। आई नो कि ये सब फेस्टिवल्स नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मतलब ठीक है, आप जैसे 2019 वर्ल्ड कप फिनिश हुआ, यू मे नॉट रियली थिंक अबाउट प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन आप 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आप स्टार्ट कर देते हैं अपने वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन। आपने जैसे देखा है बहुत सारे ग्राउंड्स में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ग्राउंड रिलेज हो रहे हैं, पिच रिले हो रहे हैं। लेकिन ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड दिस इज very very disappointing. I'll talk, why is it disappointing for me as a fan and what I was basically thinking of doing something in Eden Gardens. That's a very separate sort of a topic. पहले आपका पाकिस्तान के साथ फियास्को कि यू आर नॉट एबल टू स्टैम्प योर अथॉरिटी कि भाई पाकिस्तान को कहाँ खेलना है। मतलब अल्टीमेटली पाकिस्तान को जहाँ खेलना था वहीं खेले। डेट्स का प्रॉब्लम, वेन्यूज का प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू शट दैट डाउन, शट दैट नॉइज डाउन। पहले मतलब ठीक है, इट्स नॉट सच अ बिग इशू, लेकिन मेरा वहां पे भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, व्हाई इज बीसीसीआई नॉट टेकिंग दैट हार्ड डिसीजन अगेंस्ट द पीसीबी कि भाई जो डिसाइड हुआ है दैट डिसाइड हुआ है। there is no moving back, there is no changing of venues. Like, मैंने कभी नहीं सुना यार, I've been following cricket for almost 90 from 1996. This is the very first time I'm hearing someone complaining that I want to change venues. या I mean, कल को utterly rubbish. ऑस्ट्रेलिया बोलेगा हम चेन्नई में ना बहुत सारा गर्मी है यार, इट्स हाउ ह्यूमिड, आई डोंट वांट टू प्ले Humid. इन चिपॉक, आई वांट टू गो एंड प्ले इन बैंगलोर, वहां पे वेदर बढ़िया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ बढ़िया है। रबिश आर यू डूइंग हियर? एंड तो सम ऑफ माय टू क्वेश्चंस, हाउ डू फैंस बुक टिकट्स जब ये स्केड्यूल ऐसे चेंज हो रहा है? yeah, we'll come there, we'll come there. Second, यार अब ठीक है, आई थिंक पाकिस्तान वाला इशू, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ क्लियरेंसेस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान बोल रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना है। आई मीन दे आल्सो कम अप विद सम स्टूपिड सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डिमांड्स, लेकिन वो नॉइज मुझे लगता है बहुत क्रश करना चाहिए था बीसीसीआई को, दैट्स फ्रैंकली ट्रू। स्पीकिंग। नंबर वन, ठीक है, दैट इशू हैज बीन हैंडल्ड, लेकिन अब यार 2 महीने रह गए हैं, राइट? 2 months. Less than 2 months, 59 days. Yes. They have put a counter on their official website. 1 month, 29 days to go. आपका एक ऑफिशियल शायद सॉन्ग जो भी बोलो आया है वर्ल्ड कप का, वो रिलीज हो चुका है। Someone who is staying in US, let's say I mean and possibly you are actually you are coming at that time, almost at that I'm time, around that time in India. right? और आपको टिकट बुक करनी है,
या फिर let's not even talk about ticket. आपको कुछ अपना schedule plan करना है. You don't have the clarity. And I'm just talking about you as a person in the first world nation. You know, let's me talk about कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे मालूम नहीं कि कब गेम है. इंडिया पाकिस्तान का गेम 15 तारीख था, अब 14 तारीख है. अब इट वाज ओनली वन ऑफ गेम. पहले तो एक गेम के बारे में यार, जैसे ये गेम आया, आई रिमेम्बर, आई थिंक फ्यू डेज बैक आई वाज चेकिंग व्हाट आर द अदर festivals, because October, November, everyone knows everyone it's a knows सारा season of फेस्टिवल festival. टाइम है. It's a आपका season of festival. दशहरा शुरू होता है, नवरात्रि शुरू होते हैं, goes all the way till Diwali. Didn't you know this? और देखिए, मेरा एक और क्वेश्चन ये भी रहेगा कि ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, यू आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. आपको लगता है, आई मीन आई टेक दैट व्यू फ्रॉम यू एज वेल. आपको लगता है कि आपको वेन्यू शिफ्ट करने चाहिए जस्ट बिकॉज यू हैव अ फेस्टिवल? और उस टाइम पे इंडिया नहीं खेल रही, उस टाइम पे इंडिया नहीं खेल रही. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो भी मैच है, विच इज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पाकिस्तान, आई डोंट नो who's game in Eden Gardens. England I know is playing in Eden Gardens, कोलकाता, नवंबर में जो गेम होगा. उस टाइम पे इंडिया नहीं खेल रही है, सो यू नो कि इंडिया का जब मैच नहीं होता है तो ज्यादा स्पेक्टेटर्स उतने ज्यादा नहीं आते हैं. आप वो भी डेट चेंज करना चाहते हो? आई नो कि आपका फेस्टिवल है. फर्स्ट तो मेरा पॉइंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल, आपने जब डिसाइड कर लिया, आई थिंक यू शुड गो ऑन विद दैट पर्टिकुलर डेट. You are a fifth largest economy. I think you would have all the resources available to manage the security. मेरे को लगता है, I can be wrong, लेकिन I don't think you should be shifting your dates because of festivals. I have not heard in any other events कि अगर कोई या फिर आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि भाई, जैसे हमने पहले बताया कि आपको मालूम है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कि ये फेस्टिवल्स है, देन डोंट हैव योर गेम. सो ईदर दिस और दैट, मेरे हिसाब से. So, I mean, I'm surprised because the statement I was reading here, development came after the city police informed CAB, the Cricket Association of Bengal, that they are expecting enhanced security for the game as Pakistan is one of the teams. Didn't you know this? Didn't you plan for this as a police authority that a game ho raha hai, I need to provide security. And if I can't provide security, tell the BCCI ki, I can't. Can you not move this? Can you move this along and don't make this a schedule? यहाँ पे मैं बीसीसीआई को ही मैं क्रेजी और इनकॉम्पिटेंट नहीं बोल रहा हूँ. यहाँ पे मैं आई एम आल्सो पॉइंटिंग फिंगर एट द लोकल स्टेट एसोसिएशन, in this case the Cricket Association of Bengal, for being so stupid and so idiotic in terms of managing the expectations here. And also a bit of a political game here. आपने ममता बनर्जी को रीच कर लिया कि भैया अब आप हमें हेल्प कर दो कि मूव डेट करें. In all of this, they don't give a damn about a fan. They don't care. फैन ने अगर क्रिकेट बुक कर लिया, अपने फ्लाइट बुक कर लिए, अपने होटल बुक कर लिए, इनको भाड़ में जाओ. उनको पता है कि भैया हमारा 90,000 का स्टेडियम ना भरेगा, फैंस आएंगे, क्योंकि यार पागल अबाउट क्रिकेट. It just shows. And that's why for me it's, when I look at this, it's not just incompetence. There is incompetence here across the board, from state authority, from the police authority, from the state association, and from BCA, but also there is an arrogance here कि यार इनको आना ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है हम चेंज कर ले या ना कर ले. And I think it shows me that, and I don't want to say this, BCCI may be the richest body in the world, but India is still a third-rate third world country in that, in terms of managing that world class tournaments, in terms of organizing that the world class tournament, keeping fan in mind, keeping your cricket That's customer in mind. It's a customer centric behavior. आप अपने कस्टमर, वो पैसे पे करके आपको देखने आ रहे हैं, आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, 2 महीने हो रहे हैं, you are not giving them the opportunity to book their flights, book their tickets, plan their trip, and asking to make the changes here because hey, because I want to make that changes here. uh, and I'm keeping that cricket fan in mind. Sort of I duck some of that information how others are doing. तो अभी as we speak, FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में. और मैं एक फुटबॉल गेम, अमेरिकन कॉल इट सॉकर, मैं यहाँ पे एक गेम देखने गया था इन वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज. एंड
I have seen a game in India. So for me, I could compare the sport. Okay. Sports are a little different, but the experience of a fan, it was night and day. और यहाँ पे मैं आईसीसीआई को ब्लेम करूंगा, आईसीसी क्रिकेट को। शायद बीसीसीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्या पता, मतलब टूर्नामेंट तो कंट्री कर रही है। सबसे पहले मैंने लुक्ड एट इट वाज आई कंपेयर्ड आईसीसी क्रिकेट स्लैश कंपेयर्ड विद फीफा और प्रीमियर लीग सीरीज। बिफोर मी गो एंड से कि यार बीसीसीआई करप्ट है, ये पॉलिटिकल है एंड ऑल दैट, फीफा भी स्कैंडल से अभी गुजरा है, उनके यहाँ पे भी करप्शन स्कैंडल हुआ है। प्रीमियर लीग के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। दिस इज प्योरली लुकिंग धंधा वाइज, बिजनेस वाइज, हाउ यू गिविंग योर एक्सपीरियंस टू योर फैन, जस्ट लाइक हाउ अ बिजनेस गिव्स एन एक्सपीरियंस टू अ कस्टमर। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, जब आप होटल जाते हो, यू गेट एन एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। Shaurav, look at this. When I did this, it was blown my mind here. FIFA का मुझे data आया Reddit से. One of the guys went into the Australia cricket game. He kind of pulled it up in the Australian cricket forum. Was there Premier League Summer Series USA, जो Premier League यहाँ पे टूर हुआ था, जो मैं live experience करके आया हूँ. So this is a personal experience. I have seen it in live. और जो आईसीसी का क्रिकेट अभी हो रहा है, मार्केटिंग, आपने बोला अभी सॉन्ग हुआ है, मैंने तो नहीं देखा, आई एम नॉट सीन इट, लाइक percolating in social media, on Twitter threads, Instagram. It's not like it's wide, it's worldwide. It's happened maybe, but it's not like they're promoting crazy how they did for IPL. IPL का सॉन्ग तो हमें 2 महीने पहले पता चल जाता है, it's already there. स्केड्यूल, आपने हमने अभी बात करी, वापस चेंज का मांग कर रहे हैं। फीफा का स्केड्यूल पॉसिबली 1 साल या 8-9 मंथ्स पहले ही कंफर्म हो गया था। प्रीमियर लीग का आई नो बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इट, द प्रीमियर लीग समर सीरीज स्केड्यूल खत्म, द स्केड्यूल्ड इट 3 मंथ्स ऑलमोस्ट बिफोर द एक्चुअल टूर्नामेंट स्टार्टेड, जब तक प्रीमियर लीग खेल रहे थे। सो इट्स लाइक irrespective what you're doing, you need to get this right. टिकट सेल 60 days हुआ है, अभी तक टिकट शुरू नहीं हुई है, and I'll talk to tickets in our next segment. So FIFA was 11 months before they started the ticket sale, 1 साल पहले, and it's in a World Cup. So possibly the right combination. You're doing a women's World Cup versus an ICC Cricket World Cup. One guy did it 11 months before the start of the tournament. Other guy is yet to go 2 months before and has not even started it. Heck, Premier League Summer Series is a friendly tournament. उन्होंने भी 3 महीने पहले ही उन्होंने टिकट शुरू कर दिए थे. And from what I'm hearing, for the World Cup ticket, you have to go and buy it from Paytm and Book My Show. I'll come to that whole Paytm and Book My Show in just a minute. The whole ticketing aspect. Tickets. They're asking physical paper tickets to be brought to the stadium. FIFA, on the other hand, no paper tickets. The one I did, no paper tickets. Tickets also cannot be resold in either of them. And लिया. The way it works is, अगर आपने ticket entry करनी है, यहाँ पे आपको इंडिया में physical paper ticket present करना पड़ेगा, पर्ची लानी पड़ेगी. The one in FIFA and the one I saw in the Premier League Summer Series, you come with your phone, you scan your barcode, and then you enter through the security. Yeah. Barcode na एवं generate नहीं होता है. It basically 1 or 2 hours before, it kind of is like active before the tournament, right before the start of it. Or the smart guys will say, "यार हम screenshot ले लेंगे barcode का and we'll go with it." No, when you take a screenshot in these tournaments, वो screenshot will not work at that scanner because scanner recognizes it is not the actual app barcode, which is a screenshot. So the screenshots don't work. You have to get your phone, you have to show the app, you have to scan the barcode from the app, and then you're presented in. और अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, refunds process in India is like painful. It's transferable. I have the terms and conditions as well. FIFA or Premier League Summer Series में you can go to the official resale platform. The way I joined, I saw the Premier League कैसा हुआ था. किसी ने I think टिकट लिया था, शायद नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने टिकट मास्टर वेबसाइट है, उन्होंने वहां पे रीसेल में डाला. So I bought a verified resale ticket. It is vetted by the company, so it's not like the prices were 10 times more. Yeah, sure, obviously they had to put it at a higher level because वो last minute का टिकट था. But the process was streamlined. आप वेबसाइट जाओगे, आप वहां से खरीदोगे, you put it on the app, you show the app, you get into the stadium, and then you'll enjoy the game. Fan experience. So this is for me the biggest one, which I think is going to be the one where I don't know about India fan experience here, but the way the schedule has been done, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करेंगे.
FIFA में you got a festival zone. There are hundreds of volunteers. There's a dedicated bar section. मतलब जिनको पीना है वो पी सकते हैं. There's food trucks. You want to eat a lot of food. You can get different varieties of food. Get this, for food, if the local team is playing or the two different teams are playing, like Korea is playing Japan, there could be an Asian segment for people of those nationalities to watch and have that cuisine. Mexico खेल रहा है तो Mexican cuisine हो रहा है. American खेल रहे हैं, there's that whole burger pizza joint and all of that, the American food, the fast food. There's music and activities for family and kids, because going to a stadium to watch a game is an experience. It's a family event. प्रीमियर लीग जो समय सीरीज जो यूएसए में हुआ था, जो मैंने देखा था, there's a dedicated PL fan zone. मतलब people could come in, I could come in an hour before the game started. I could see the mahol building up. Not only there's music, but also I could get the shirt of the jersey scanned with my favorite players of the club. बच्चों के लिए वहाँ पे, there's a darts game, so you can get like prizes. मतलब there's an activities going on for the thing. Volunteers were amazing. I cannot tell how beautiful it was. The way they have organized in the Atlanta stadium, in the Mercedes Stadium in Atlanta. Bar ka alag section tha. There were food court. You want to eat popcorn, there's a space for that. You want to eat some chicken sandwich, there's a space for that. You want to eat some ice cream for kids, there's a space for that. Options were there. There were restaurants you could sit down and eat if you're going. I paid a nicer ticket. There's place for that. It's kids fun zone area. So some young kids, they want to play around. They may not be interested in the match. This is a fun zone segment. The experience of जो FIFA यहाँ पे बता रहे थे, and what I experienced was similar. I am not sure Indian experience would be the same thing. And अभी हम जो बात कर रहे थे क्रिकेट स्केड्यूलिंग का, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि बीसीसीआई डजंट केयर अबाउट द क्रिकेट फैन. दे जस्ट केयर अबाउट कि यार हमें पैसे बनाने हैं थ्रू द मीडिया राइट्स, एंड विल मेक दीज स्टेट एसोसिएशन रन अराउंड and broadcast rights for the TV, because my audience is TV. Okay, fans आएंगे, let the stadium be full, let them show the paper ticket. It's like you can see the difference between top tier organizing of a world class tournament versus what ICC's or the BCCI in this case is doing. Yeah, just take a few minutes. I mean, you put a lot of categories, before getting into the fan experience, and I possibly, I may not be the right person as well, because मैं India के cricket grounds में एक दो बार गया, and it's been a very disappointing experience. But this was a little while back. So when I say a little while, 6-7 years back was the last experience that I had basically in Hyderabad. I won't say it was little disappointing. It was very disappointing. I've seen one, and it was, and I've seen one, and I can now see it was Zameen Asman ka farak. Granted, it was many years back. Yeah, and I was in Camp Nou. आपको मालूम होगा मैं वहाँ पे गया था. Not that I was in a match. मतलब वहाँ पे match नहीं चल रहा था, लेकिन आप वहाँ पे general public basically can go even though match is not happening. Similarly in Birmingham, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन आपको पता चल गया देख के, the overall fan experience when the match is happening is going to be great. The washrooms are world class. उनका पूरा जो organized है, cafe वैसे, कैंप न्यू में मैंने देखा था, इवन इन बर्मिंघम में मैंने देखा था, वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स, कैफेज दैट दे बेसिकली हैव. यू कैन बेसिकली, आप सोच सकते हैं कि जब मैच हो रहा होगा, you're going to have a very terrific experience. और मेरी वाइफ वहां पे जा चुकी है, and she talks about it. She likes being there, the overall atmosphere and stuff. I did not find that in India, that is for sure. Lekin I'm going to reserve my comments. I possibly am going to try to watch a World Cup match, not the India wala match avoid karunga, because I think it's going to be very overcrowded. I'm going to try to, let's say more. I think Hyderabad mein none of the matches are Indian matches, so ho sakta hai crowd वहाँ पे कम हो, so I'll try going there. First, coming to marketing. Marketing, I think it talks about, what BCCI preferences of BCCI. अगर IPL चल रहा होता, fantastic example. जब आईपीएल मई में होता है, 3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से, ठीक है, it स्टार्ट हो जाता है, those ads, your players are coming in those different ads of different companies who are sponsoring IPL. Everyone kind of, at least in India, knows about IPL. This is a world event, right? So it's not only कि आपके इंडियन ऑडियंसेस आएंगे, पाकिस्तान के भी ऑडियंसेस आएंगे इस बार,
आपका हो सकता है श्रीलंका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हार्डकोर क्रिकेट फैंस हैं, बामी आर्मी हैं, आई नो बामी आर्मी ज्यादा टेस्ट मैचेस में आती हैं, लेकिन इंग्लैंड के भी फैंस आ सकते हैं। सी यू कैन हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन एज फार एज स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मुझे इंडिकेशन ये जा रहा है कि ऑल दैट यू केयर, एक तो है कि मुझे लगता है टिकटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ठीक है यार, कल भी हम टिकटिंग को डाल देंगे सेल के लिए तो टिकट्स बिकी जाएंगे, दैट्स अ फैक्ट। आप कल मैच है आज डाल दो, टिकट बिक जाएंगे, इंडिया के तो सारे बिक जाएंगे। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दी अदर अदर गेम्स वेयर इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चलता है कि what are the priorities of BCCI, and we have kind of spoken about what are the priorities of BCCI and making sure they preserve, or they make the test match famous at least in India. We have kind of spoken about it. और यहाँ पे मुझे इनका थोड़ा प्रेफरेंस लग रहा है कि भाई ठीक है, आईपीएल है तो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, ठीक है। आई मीन देयर ऑलरेडी टॉक्स अबाउट की ओडीआई वर्ल्ड कप बाद में जाके होगा नहीं होगा, लेकिन स्टिल इट्स अ वर्ल्ड इवेंट। आपको अपार्ट फ्रॉम शोइंग consideration to Indian audiences, आपको international audience या international spectators who would want to come over to India and watch the game of cricket, आपको उनका भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मार्केटिंग नहीं दिख रही है। एक वीडियो आया है, वहां पे भी थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेकुलेशन ये था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स है ही नहीं उस वीडियो में, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था एटलीस्ट इन Not पाकिस्तान। surprised. या वो हुआ था। फिर स्केड्यूलिंग पे वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, अभी तक नो वन नोज कि कौन से डेट पे क्या मैचेस हो रहे हैं। टिकटिंग सेल्स 60 days to go, नो क्लैरिटी कि व्हेन आर दे गोना गो I लाइव। know. मतलब अगर इंडिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के मैचेस दे गोना गेट सोल्ड आउट, आई नो फॉर अ मैटर। लेकिन दूसरे जो मैचेस हैं, लेट्स से पर्सन लाइक मी, आई पॉसिबली एम नॉट गोना वॉच द इंडियन क्रिकेट गेम, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। आई वांट टू वॉच लेट्स से इंग्लैंड पाकिस्तान, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, व्हाटएवर इट इज। आई डोंट हैव अ क्लैरिटी कि भाई मैं कैसे टिकट लूं। कुछ अभी ऐसा न्यूज वगैरह मेरे को तो नहीं आया, आई थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन मुझे कोई कोई न्यूज नहीं है। Tickets, physical paper tickets. I mean, everyone kind of brags about, and rightfully so. I mean, the kind of development that India has basically done in going paperless in a lot of aspects. COVID हुआ, आपका यूपीआई वगैरह हुआ, लेकिन in this day and age, if I require a physical ticket for a world event, for a world event, it's not a Ranji game. I think it's very disappointing. Yeah, and Very, very disappointing. you boast. I mean, Jaisha and the BJP. I mean, the whole Rajesh, in Rajesha. Yeah, India UPI digital है भैया, India आगे पहुंच गया 20 साल आगे, across the world. And for a World Cup, when you want to promote India to the world in other countries, like you just did in USA with Major League Cricket, you are telling, yeah, I cannot do UPI, I cannot do digital tickets. Get the irony. You are going and buying in Paytm, and then you will take a bloody printout and then go and stand in the line to get the whatever thing. Is this the kind of a joke you want to portray forward? कि हम हैं digital India और हम हैं. It just proves India is still a third world country. It can't do it. But Saurav, you raised an important point. India and BCCI knows how to organize good tournaments, which is why I'm saying it's more also an arrogance here. I'll give you two examples of the last few years. पहली बार आईसीसी आईपीएल टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका यूएई गया था within the short frame of time. This was few years back. BCCI pulled off a masterstroke in organizing that IPL amazingly well. With the changes they had happened, and during COVID, they moved in weeks because a player got tested and they started the tournament in India, and then they within 2 weeks they moved everything to UAE, Dubai, and I think Dubai, Sharjah. I think we're doing the IPL testing. So no, I don't think the BCCI does not know how to do with this. They know exactly how to organize a world-class tournament. They have done it. This is sheer arrogance here. They don't give a care about Indian fan or a ODI World Cup,
and कि भैया इनको ये करवा देते हैं. अगर यही UAE में करना होता था तो 2 हफ्तों में they'll do it, and then they would have been absolutely this thing packed, the packed scheduling arrangements, logistics, and all of that would have been done. IPL है तो they'll do it world class. 50 World Cup, yeah, all right, we'll do it. I think India की priority change हो गई है, especially BCCI की, and I think अब वो दिख रहा है कि you don't care, you know we'll Possibly get there. it's kind of reflecting in their policies, it's kind of reflecting in their marketing, and possibly it's kind of reflecting in their players and the way they're playing. I mean, maybe a Possibly. very premature statement. I think हम लोग बोलते हैं जब Maybe इंडिया हारती here है. BCCI doesn't give a damn about the ODI World Cup in cricket because ठीक है पैसे बन जाएंगे. I mean, I am making money, but people just want 20 overs game. They don't want us 50 overs all day. Uh, in that scenario, that really brings into the question: is there a future for 50-over game in this part of the world? I don't know the answer. That's probably this thing. So it's not that I feel that BCCI cannot do it. It's just that maybe they are choosing not to do it in that particular aspect. And आपने भी Indian experience की बात करी है, and there was a really beautiful article written by Siddharth Monga on Crick Info. I mean, I loved it, and because मैंने अभी ये game देखा था, आपने भी इसका बात करी थी few minutes back. You are interested in watching the game in Eden Gardens, if not India for other games. I think they don't care about Indian fans who come to the stadium. They just don't care. Absolutely. And they just care about the broadcasters because उनको पता है कि ये लोग नहीं आएंगे. I would rather, you're looking at a very business angle. I would rather cater the 150 million or 200 million. Let's say I'm making the number of 500 million people who will watch it on, the streaming and on TV, as opposed to the 75,000 people or 60,000 people who's going to come to that Dharamshala or Lucknow because I जाएंगे. And I think that is such a disdain on the common fan, on the common citizen on India. It shows it right now. So this was, the Siddharth Monga's article. मैंने थोड़े snippets डाले हैं यहाँ पे. मैं पढ़ रहा हूँ for people who are, may not be watching this, in front of the video. It's like Siddharth says, even those who had managed to buy the small percentage of ticket made available online. He's referring to the IPL का जो अभी हुआ था. Those who wished to actually buy the tickets being sold offline turned up in large numbers. In peak summer with no shade, people waited for hours for tickets that would run out in minutes. There was no attempt made to separate the two kinds of customer. Naturally, there was chaos. Out came the batons. A colonial gift of the Indian police has refused to give up even after 75 years of independence. There must be an effective tool for crowd management given how they are commonly used by the Indian police. In Ahmedabad, the ticket sales at the counter started only one day before the final. This was referring to the IPL final. Those who booked tickets online received emails telling them they need to come and pick up their physical tickets before a match day. It would not be possible to collect them on the day of the game. So आपको पहले एक दिन आना पड़ेगा. To create a perfect storm, it was decided for this match there would be no other collection point in the city. And so we saw that nightmare stampede situations for both those playoff games and the IPL final thing. This was an image यहाँ पे रखा है, यहाँ पे screen stadium में आता है. Please keep your physical tickets safe. And then जो भी पिछले साल हुआ था, जो अभी साल हुआ था, India played Australia and Indore, the Border Gavaskar Trophy. They moved from Indore to Dharamshala last minute because of the outfield issue. The Dharamshala से Indore, sorry, वो धर्मशाला में outfield का issue हुआ था. There was a panic and uncertainty कि भैया हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों ने tickets book करे हैं, पता नहीं क्या है. And then the RCCI did not send any apology note to the fans कि यार हमसे, regret the inconvenience. Match is now moving to London. Match is now moving to Indore. And so there was nothing, no address to fans or inconvenience caused to them. जिन्होंने tickets book किया, yeah, I mean, it is what it is. And so go through the, the hellhole process of whatever the defense is. It kind of shows that, BCCI has a valier attitude towards stadium experience and just cater to the streaming and the broadcasting experience. Very disappointing. I think ये article, I think मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए before they choose to go to stadium and experience the game of cricket. I think I'm gonna be doing this. I'm gonna actually test the overall experience इस बार जो World Cup है. And I know, I think BCCI ने बात की है. They're going to improve the. I'm going to talk about that. What are they doing that as well? They're going to talk about. I mean, they're possibly going to improve the experience. I don't know what those experiences are. Maybe you're going to talk about it in the upcoming slides. You might show it.
लेकिन मैं देखना चाहूंगा the overall experience, has there any been changed in the last decade? मैंने जैसे बताया, आई थिंक दो बार जा चुका हूँ एंड एक्सपीरियंस वाजंट दैट ग्रेट. लेकिन इट्स यू परफेक्टली सेड दैट राइट. आई थिंक ये जो स्पेक्टेटर्स गए भाड़ में, ठीक है, 500, 500 million, 600 million people would end up anyways watching, the game of cricket from home. Their digital rights are secured. पैसा आएगा at the end of the World Cup. मैं I think एंड ऑफ द वर्ल्ड कप आप बोलेंगे कि वर्ल्ड कप सक्सेसफुली मतलब चल गया. आई मीन बीसीसीआई ने अच्छा क्या बोलते हैं उसको, दे रैन द शो प्रीटी वेल. दे अर्नड अ हेल लॉट ऑफ मनी व्हिच दे विल. लेकिन दिस इज द होल कस्टमर एक्सपीरियंस इन इंडिया ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ जैसे कभी रोड बनती है सिटी में, नॉट द नेशनल हाईवे, सिटी में जब रोड बनती है 6-7 महीने के बाद रोड बन जाएगी, बहुत अच्छी बनेगी, अच्छी रोड, आपका एक्सपीरियंस Absolutely. अच्छा रहेगा. लेकिन जो 6 महीने में जो नाइट मेयर दैट यू हैव टू गो थ्रू, राइट, Yeah. जो आपको यू हैव टू पास थ्रू दैट रोड, सैंड एंड ग्रेवल, वो जो Yeah. रहता है एक्सपीरियंस, दैट इज गोना बी नाइटमेयर. इट काइंड ऑफ Yeah. रिमाइंड्स मी, व्हिच इज Yeah. वेरी सैड. It's terrible, and so that is what it is here. This part of it, and so really the question to the group is really BCCI arrogant or incompetent, and that's why मैंने जो article में मैंने अपने slide में लिखा था or incompetent, मैंने वो or को and change कर दिया because answer is they're both. They're both arrogant and they're both incompetent in this particular aspect. I mean, these are the two screenshots I have. एक में there was an issue with BCCI was unhappy with Bengal Cricket Association कि उन्होंने टिकट्स का अनाउंसमेंट पहले कर दिया और उनकी ये प्रॉब्लम थी कि आपने बीसीसीआई को कंसल्ट नहीं किया बिफोर अनाउंसिंग द टिकट प्राइसेस. एंड सो देयर वाज अ टिफ बिटवीन बीसीसीआई एंड CAB on that one. And this happened couple of weeks back. और आज कल अब ये मीडिया में आ चुका है, हम अब बात कर रहे हैं क्योंकि अब मीडिया में भी आ चुका है. English cricket broadcasters have already mocked the Indian board of over this World Cup scheduling. उन्होंने बोला कि बीसीसीआई is the most incompetent sporting body. मतलब most सुपरलेटिव बोल दिया, और नॉट जस्ट क्रिकेट, स्पोर्टिंग बॉडी, मतलब क्रिकेट छोड़ो पूरे स्पोर्ट्स में it's one of the most incompetent sporting body. And kind of the results we just talked about kind of proves maybe BCCI want to be known like that. I mean, and probably they don't care. Just like there is a, I don't give a damn. And so this is an interesting segment there. And I thought I share this one, Saurav. मैं आज देख रहा था कि टिकट्स कैसे मिलेंगे. Kid you not, मैं वेबसाइट गया, मैंने देखा वो टर्म्स एंड कंडीशन. भैया टर्म्स एंड कंडीशन डॉक फाइल था, वो डॉक. Who puts doc file in 21st century for organizing a World Cup tournament? You would have a PDF, or you would have a a nicer website segment where you have terms and conditions. It's a basic product management 101. But no. So I want to read you this one. This was a prohibited and restricted behavior experience, part of the conditions of the ticket. It says that what do you call the the ticket holder cannot engage in any public nudity or indecency. Fair enough. Excessive noise or any kind of interference with the conduct of the match. The wearing of other display of commercial, political, or offensive signage or logos. The throwing of any object that might injure or cause damage to people. The obstruction of gangway, accessway, exit, and entrance staircase. Climbing walls, fences, stands, lighting, masts, or any other structures or construction in the venue, or standing on seats. Okay, this was the first one. And then it says that you cannot bring, you cannot be, you cannot be smoking, you cannot be defacing, you cannot be drinking alcohol, you cannot bring any metal cans or glass bottles, only other than whatever is purchased in the venue. You cannot bring any animals unless service animals. This is the fun part. Is in the possession the prohibited items, including banners, placards, leaflets, signs, or other materials, items, or clothing display political, religious, offensive, or race-related messages, slogans, or images, or promotional, commercial identification, or messages in breach of the paragraph 23 of these conditions. And the last one in the media recording terms and condition was photographs and or other recording of the sound made or images taken in the venue may be used for personal, private, non-commercial, and non-promotional purposes only. The ticket holder shall not, except for personal or private, non-commercial,
and in any event for commercial gain, make or use or broadcast, narrowcast, telecast, transmit, publish, disseminate, reproduce, or circulate by any means, including with limitations to utilizing television, radio, internet, or any wireless services or any other current or future means of the format or any broadcast recording, audio, video, photograph, text, data, images, statistic, result, commentary, news report, or any other information in each of these things in the conduct of the services. अब कहना क्या चाहते हो कि वो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए and and he should know he could record it for personal, but if he puts it, if he's an influencer, puts it and in his thing, that's illegal. You put all these terms and conditions, you implement zero of all of this. Yeah. Why even bother putting all this apart from save yourself from litigation or whatever? It was hilarious when I looked into this and saying, what's the point? What's the point? Absolute terrible. I think just एक point आपका जो पहले वाला जो slide था जहाँ पे England I think broadcast Yeah, I think it this has is the kind one. of spilled over even to the Australian broadcasters or Australian maybe let's say editors या फिर whoever kind of writes about cricket in Australia. वहां पे इट्स नॉट अबाउट गोरी चमड़ी काफी लोग बोल सकते हैं कि यार ये गोरी चमड़ी वाले जो बोलते हैं वही सही होता है इट्स नॉट अबाउट दैट आई थिंक वी आल्सो हैव टू डू लिटिल अमाउंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एज वेल आपके पास वर्ल्ड इवेंट हो रहा है वी जस्ट काइंड ऑफ हाइलाइटेड all the possible the worst that could possibly happen in organizing a world event has already happened. Yep. I think the only best thing that we can basically hope for is come the World Cup, it goes on smooth. Ultimately, let's say India wins the World Cup. That would be the best case scenario. Lekin that's the only best thing that is kind of left out. Lekin organize karne mein, what's the worst that anyone can do? I think this is it. I'm talking as a pure cricketing fan. There is nothing कि भाई अगर कोई गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है उसको accept कर लिया जाए. It's not that case. आपको दिखाया है कि at each and every stage कहाँ पे BCCI गलती कर रही है. So, yeah, and और जो आपने जो rules वगैरह बताए यार it's a joke. It's a joke. Why would you put this in your terms and conditions? Why would you put this? I mean, it makes no sense. And so it kind of shows. I'm not surprised they were mocking us here, and on all of the the Western media mocking is absolutely true here. I mean, I am mocking. I'm a brown skin Indian. I'm mocking because it's nothing to do with skin here. It's to do fact is you are supposed to do the event for your citizens, your fans, for people who are coming from the world. 10 country ke log aa rahe hain. You want to showcase cricket as the next big thing. You don't do this. When you know your priorities IPL, you do it so well. IPL को एक अलग measurement देंगे and ICC event को एक अलग measurement दे रहे हैं. This is clearly BCCI has decided कि भैया हम तो यही है अब. And so this is where I'm ending this one. This is the ticketing process जो अभी next week हो रहा है. This is what they said. To ensure a smooth ticketing process, BCCI specified physical paper tickets will be used for stadium entry during marquee events. Yeah, so Make in India is not required for here. Even though those who purchase tickets online, like your Paytm or your Book My Show, this is where I'm coming in. Printed tickets must be collected and presented at the entry gate. ये कौन करता था? ये इंडिया 1980s में करती थी, लाइसेंस राज में. या प्रिंट आउट ले आओ. You don't print out when you go and take a flight today, but no, you will not take a printout then, but you want to take a flight and then get to the stadium. You better get a printer of go to get a printer for this one and then present that in this thing. Look at the statement they said. Each ticket collection will boast a minimum of 7 to 8 counters. Now, okay, they've had one in the Ahmedabad IPL, or they made it 8, allowing spectators to effortlessly obtain their printed tickets. Yes, Rajesh Shah ne ye kaha. Ample time will be provided before the commencement of each game to guarantee the orderly distribution of tickets. To accommodate the vast number of fans attending the World Cup, there are plans to set up additional ticket collection centers in various cities separate from the stadiums. Now, I think this is a welcome move. I think they've realized the mistake of Ahmedabad IPL fiasco.
The introduction of e-ticket system for bilateral games, bilateral, remember, not World Cup, will likely streamline ticketing procedure, making it accessible and user-friendly for fans. And get this, this I picked up from the article on the internet here, which was talking today. They said, as per the provision, the ICC and BCCI are entitled to receive 300 hospitality tickets each per game. Additionally, the state association are required to provide 1295 league tickets for league games and 1355 tickets for India and semi-final to ICC. The state association must allocate 500 general tickets free of cost to the Indian board. Outside these specific quota, each state association has an opportunity to purchase the 40 tickets per game, and ICC tour partner can buy the 10% of the remaining tickets. This distribution model aims to strike a balance between accommodating various stakeholders and ensuring that a significant portion of the tickets is accessible to the cricket enthusiasts. तो basically सौरभ ये कह रहे हैं कि जो 300 हॉस्पिटैलिटी टिकट लोग ना उनको राजा वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो ये स्टेट एसोसिएशन वाले टिकट्स हैं 1200 and 1300, they're going to get the VIP treatment. And then बाकी के the state association जो है, they'll get 40 tickets per game. And then the tour partners, so you'll have those specified sponsors, they could buy the remaining 10%, again 10%, जो भी है. So घुमा फिरा के मैं, I mean, I'm roughly calculating it here. 2,000 to 3,000 people will have a fantastic experience because they are getting these hospitality tickets and these quota tickets. तो उनको VIP treatment मिलेगा from police की भैया इनकी checking, whatever, get them, give them the right experience. But the remaining 40,000 people who are going to come to the cricket, yeah, you guys stand in line and get the printout, because that is how it is. So essentially the priorities are very clear. Give the best experience to that 1%er, and cricket fans can go and take a hike, stand in the line and get the sugar printout. Very This I think is Cricket World Cup in India. ये चले आ रहा है. I mean, we've been hearing this for a very long time. कोई भी इंडिया के मैचेस होते हैं, अगर आपको टिकट्स चाहिए, it's a nightmare sort of a process. और ये 2023 में भी चल रहा है, which is kind of very surprising considering the kind of technological advancement that this country has made. So नहीं डिजिटल इंडिया है जी, डिजिटल इंडिया है, नॉट एप्लीकेबल टू वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप तो एनालॉग ही चलेगा, आपको प्रिंट आउट लेके ही आना है, आपको डिजिटल नहीं चलेगा. Yeah, so we'll end it here. It's absolutely appalling to see their experience. So I think you should document your experience if you go to Eden Gardens, if you end up in that part of the world in November, October. Oh yeah. I would want to vet what we did today, and we'll do another video when we go at आपका experience कैसा रहा. My own experience of a soccer game here, I think, based on what I'm reading, I think India has miles to go ahead before they can conduct a world-class tournament. I would say I think BCCI is arrogant here. They can do it. They have the richest body. They can do it if they want to. I think they just choose not to. I think it just shows them priorities of where BCCI is. IPL होता तो ये अलग level पे करता. And I think that is so telling here when I read all this. And I think that's, as a cricket fan, I think that's the loser is a cricket at the end of the day, and a cricket fan who wants to watch a game in a stadium. That's true. Yeah. All right, we'll end it here. Thank you for listening. Look, please share and subscribe. I think we just did a very different video. हम लोग usually reviews करते हैं. I really wanted to spend time today talking about some of the aspects of cricket which impact a cricket fan. No one talks about it. I really wanted to give that a perspective. We wanted to do that. So please subscribe. Please share this video to everyone so that लोगों को पता चले कि be careful when you get the right expectations trying to get to that match, or you be in that 5% who gets those hospitality tickets and those 8 1200 1300 and those sponsor tickets and all of that, so that you can get a better experience. And I think that is unfortunate, bringing that elitism into that part of the world, into that segment here, because you really want cricket to have a full experience. And yeah, so this is where it is. 2 months to go. Hopefully World Cup schedule change na ho. We'll see how that goes. All right then. Thank you for listening in. Please subscribe, please share. We will talk again later. Yeah. Bye-bye. Bye-bye.